Hello students, good morning and welcome to my YouTube channel Physics by GS Boy. Okay students, देखो आम प्रीवियस क्लास पढ़ी फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ओके सॉरी थिला. सो आज मैं देखिबो न्यू टॉपिक ना कोन न्यू टॉपिक ना हला दैट इज मूविंग कॉइल galvanometer. ओके ना कोन मूविंग कॉइल galvanometer, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन. ताको हम कोन कहि परबा मूविंग कॉइल galvanometer और deadbeat. Okay, deadbeat galvanometer which type? Pivoted type. देखो this is the pivoted type. Okay, moving coil galvanometer, that is deadbeat galvanometer or which type? Pivoted type. Okay, this is the diagram. देखो this is the diagram of moving coil galvanometer. Okay, एठी देखो T माने torsion head. Okay, that is M माने होचे plane mirror. Okay, N माने होचे north pole, S माने होचे south pole, K माने होचे core, C माने होची कॉइल और S माने होची स्प्रिंग. देखो एटा A और B टा दुईटा टर्मिनल. ओके, A और B टा कोन दुईटा टर्मिनल. ओके स्टूडेंट्स देखो एटी प्रिंसिपल टा कोन हबो प्रिंसिपल टा हबो देखो कार प्रिंसिपल मूविंग कॉइल galvanometer प्रिंसिपल कोन देखो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट माने प्रिंसिपल रे काम करिवो. ओके, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट whenever a loop or coil कोई पारो whenever a loop or coil, this is the coil, whenever a loop or coil koi paro, it is based on the principle that whenever a loop or coil carrying current mane coil kono mane current flow habo carrying current is placed in a magnetic field. magnetic field rakha wala rakha magnetic field rakha wala north pole और south pole bhitor rakha jaichi. देखो is placed in a magnetic field, it experiences a torque. कोन तयारी हबो torque which tends to rotate it. माने से torque द्वारा कोन हबो से coil टा कोन हबो coil टा rotation हबो. ओके स्टूडेंट देखो 1 सेकंड कहूची. It is based on the principle that गोटे प्रिंसिपल से काम करिवो. It is based on the principle that whenever a loop carrying current is placed in a magnetic field, it experiences a torque. कोन प्रोड्यूस हबो it experiences a torque which tends to rotate it. माने से torque द्वारा ही कोन हबो से torque द्वारा ही से coil टा रोटेशन करिवो. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें देखिबा कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल सरला. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंस्ट्रक्शन. देखो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन पॉइंट वाइज लिखिबा द कंस्ट्रक्शन. ओके फर्स्ट पॉइंट द कंस्ट्रक्शन द फर्स्ट पॉइंट. ओके देखो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन. ओके नेक्स्ट हम देखिबा मूविंग कॉइल galvanometer रो कंस्ट्रक्शन. माने डायग्राम देखि कि हमें कंस्ट्रक्शन रो कथा लिखिबा. देखो कोन अछि डायग्राम रे देखो इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल सी. गुडे कॉइल अछि देखो दिस इज द कॉइल. देखो दिस इज द कॉइल एटा रेक्टेंगुलर कॉइल अछि. देखो वन लूप कोइ पारो. देखो दिस इज ए कॉइल और इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पॉइंट. देखो कंस्ट्रक्शन रो इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल सी. कॉइल टा सी हला हैविंग अछि हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन कॉपर. माने ए कॉइल रे कोन गुडा जायछि लार्ज नंबर ऑफ थिन कॉपर पतला कॉपर एटा गुडा जायछि. देखो इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल सी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन. सी कॉइल रे thin copper wire गुड़ा जाइए. ओके large number of turns of thin copper wire. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट नंबर 2 the coil is suspended from a torsion head T. देखो एक torsion head T रे ए जो coil टा झुला जाइए. देखो बा सस्पेंडेड माने कोन झुला जाइए ताको. देखो the coil is suspended from a torsion head T. this is the torsion head. this is the torsion head T रे झुला जाइए. देखो इडो तुम से फाइबर कहि पारो. ओके दिस इज द फाइबर. ओके फाइबर. ओके एफ माने होची फाइबर. एफ होची मन रखो एफ होची दैट इज द फाइबर. ओके फाइबर. देखो द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए टॉर्सन हेड टी. देन द टॉर्सन हेड इज मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज. ओके द टॉर्सन हेड और फाइबर कहि पारो. टॉर्सन हेड और फाइबर इज मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज. ए जो फाइबर टा ए टॉर्सन हेड रे फाइबर कोड तयारी हिची फॉस्फोर ब्रोंज रे तयारी. ओके द टॉर्सन हेड और फाइबर इज मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज. ओके स्टूडेंट द कंस्ट्रक्शन देखि दियो. फर्स्ट पॉइंट इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल सी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन कॉपर वायर. नेक्स्ट नंबर 2 द कॉइल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए टॉर्सन हेड टी. नेक्स्ट द टॉर्सन हेड और फाइबर इज मेड ऑफ फॉस्फोर ब्रोंज. ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट आउटिंग
देखो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ आईवी पॉइंट ओके नंबर 3 से थिला दिस आईवी पॉइंट कोन ए सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर के माने कोन ए के माने होची देखो सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर ओके ए सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर के जान लो के माने कोन सॉफ्ट आयरन कोर ओके इज एडजस्टेड माने ताको रखा जाईछि इज एडजस्टेड इनसाइड द कॉइल माने कॉइल भीतर अछि देखो ए के दा कोन सी भीतर रहिला कॉइल भीतर adjusted inside the coil in such a way that eipori bhabore in such a way that the coil touches neither the pole pieces nor the core mane ei coil ta se toma core ku touch kariboni okay dekho inside the coil in such a way that the coil touches neither the pole pieces nor the core okay student dekho bol se dekhi dio a soft iron cylindrical core k is adjusted inside the coil in such a way that the coil touches neither the pole pieces nor the core माने coil टा कोन तमर ए coil टा neither touches the pole pieces ए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को भी टच करिवनी एक ओके coil टा देखो आ तमर के को भी से टच करिवनी ओके के को टच करिवनी तार संगे संगे ए पोल को भी से टच करिवनी ओके a soft iron cylindrical core K is adjusted inside the coil in such a way that the coil touches neither the pole pieces nor the core. Okay, students. Next time we देखिबा V point 5 number point. One end of the coil is soldered to a fiber through the small mirror M. देखो one end of the coil एटा ए जो फाइबर टा ए स्मॉल एम सारे कोन है प्लेन मिरर रे एटा सोल्डरिंग करा जाय एटा सोल्डरिंग करा जाय ए एंड टा सोल्डरिंग करा जाय देखो one end of the coil is soldered to a fiber through the small mirror M while the other end is connected to spring S the other end देखो ए गुटे एंड हला प्लेन मिरर रे तमर सोल्डरिंग करा जाय छी आ गुटे एंड तमर स्प्रिंग संग रे सोल्डरिंग करा कनेक्टेड करा जाय छी ओके स्प्रिंग संग रे एटा स्प्रिंग एटा कनेक्ट करा गला ओके one end of the coil is soldered to a fiber through the small mirror M while the other end is connected to spring S okay students next हमें देखिबा देखो नेक्स्ट VI पॉइंट कोन द टॉर्सन हेड एंड द स्प्रिंग देखो टॉर्सन हेड माने कोन एटा टॉर्सन हेड दिस टॉर्सन हेड ए टॉर्सन हेड एंड द स्प्रिंग ओके स्प्रिंग देखो द टॉर्सन हेड एंड द स्प्रिंग आर इंटरनली कनेक्टेड टू द टर्मिनल A and B देखो टॉर्सन हेड देखो इंटरनली करे भीतर कनेक्शन नै देखो भीतर कनेक्शन नै छी ए वेट जाय छी भीतर कनेक्शन नै कि कोन कनेक्शन नै छी ए टर्मिनल दिस ए टर्मिनल ए रे कनेक्शन हला से बढ़िया स्प्रिंग टा कोन हला ए टर्मिनल जाय कि से कोटी कनेक्शन बी टर्मिनल कनेक्शन है देखो बी टर्मिनल कनेक्शन दिस द बी टर्मिनल ओके दिस इज द व्हिच टर्मिनल दिस इज द बी टर्मिनल ओके देखो द टॉर्सन हेड एंड द स्प्रिंग आर इंटरनली कनेक्टेड टू द टर्मिनल ए एंड बी टू पास करंट थ्रू द galvanometer ओके ये इंटरनली जो कनेक्शन है जो वायरटा से कोन पई टू पास करंट थ्रू द galvanometer माने करंट पास करिया पई कनेक्शन करा जायछि माने टॉर्सन हेड थारो ए टर्मिनल देन स्प्रिंग थारो बी टर्मिनल पर्यंत ओके देखो वन सेकंड the torsion head and the spring are internally connected to the terminal A and B to pass current through the galvanometer okay students next हमें देखिबा theory construction complete next हमें देखिबा theory of galvanometer देखो theory देखि दे समझते theory रे कोन हबा देखो whenever but when a closed loop मन रखो when a closed loop is placed closed loop ta okay closed loop coil koi paro whenever a closed loop is placed in a magnetic field रखा गला is placed in a magnetic field कोन तयारी हबो it experiences a torque tau okay देखो when a closed loop is placed in a magnetic field it experiences a torque tau which tends to rotate it कहा रोटेट करिवो से क्लोज लूप को से रोटेट करिवो देखो when a closed loop is placed in a magnetic field it experiences a torque tau which tends to rotate it okay जते बेले हमें गुडे क्लोज लूप को हमें मैग्नेटिक फील्ड भीतर रखिबा नॉर्थ पोल साउथ पोल कोन हबो टॉर्क ता तयारी हबो टॉर्क ता कोन करिवो टॉर्क which tends to rotate टॉर्क द्वारा ही कोन से क्लोज लूप ता रोटेशन करिवो okay when a closed loop is placed in a magnetic field it experiences a torque tau which tends to rotate it okay students नेक्स्ट टाइम देखियो टाउ रा फार्मूला जानि छो आगरे पढ़ाई थिला प्रीवियस क्लास रे इट इज टाउ इज इक्वल टू कोन फार्मूला NBA sin थीटा दिस इज द फार्मूला नेक्स्ट लिखो फॉर रेडियल फील्ड गोटे केस अछि
for radial field theta is equal how much? Theta is equal 90 degree. Okay, equation में put करो. The tau is equal कौन है? That is NBIA sin 90 degree. Okay, then tau is equal कौन है? That is NBIA. Equation 2 दे दियो. एटी n माने कौन? देखो tau is equal to NBIA sin theta पढ़ी हमें. For radial field theta is equal how much? 90 degree. तो पुट करो इक्वेशन में तो tau is equal to NBIA sin 90 degree. What is the value of sin 90 degree? 1. तो कौन है? tau is equal to NBIA. एटी n माने कौन देखो? एटी n माने होची that is n माने होची that is number of turns. अनि केते टर्न्स गुडा दिछि number of turns. b माने होची magnetic field. b टा होची that is magnetic field. Okay, then I माने होची current और a होची that is area of the closed loop. Okay, area that n माने number of turns, b होची magnetic field, I माने होची current, a माने होची area. Okay students, next हमें देखिबा देखो नेक्स्ट if C is equal to torsional couple for unit. देखो मन रखो torsional couple for unit angular twist हवा पाई दो unit angular गुटे twist हवा पाई ये coil टा नहीं कि गुटे twist हवा रोटेशन करिवो गुटे twist. C माने होची देखो torsional couple for unit angular twist of the fiber. Then कौन हवा देखो then moment of restoring couple tau रा फॉर्मूला कौन हवा c थीटा. देखो कौन होए c थीटा एडी tau माने कौन moment of restoring couple tau रा फॉर्मूला कौन c थीटा. एबे इक्वेशन 2 और 3 कोटा 3 दे दियो 2 जाइछ में 3 दे दियो 2 और 3 को कंपेयर कर दियो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 कोला पर कौन मिलबा. देखो नेक्स्ट c होची कौन torsional couple for unit angular twist of the fiber. Then moment of restoring couple रा फॉर्मूला कौन tau is equal to c theta equation 3. Then comparing equation 2 and 3 comparing equation 2 and 3 compare कर दियो कंपेयर कला पर कौन मिलबो that is NBIA is equal to c theta. देख मिलबो what is the formula of I that is कौन हला that is c by NBA into theta हे परिबो. देखो I रा वैल्यू c by NBA into theta. ए c by NBA जगह रे हमें सपोज k पुट करिबा k. ओके that is equation 3 कर दियो equation 3 से 4 कर दियो give equation number 4. next where k is equal to k रा फार्मूला कौन c by NBA is equal to called that is reduction factor. That is called what? Reduction factor. Reduction 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 factor. Okay, तो equation 4 टा कौन शो कला देखि दे equation 4 shows कौन हला that is current is directly proportional to current माने I directly proportional to कौन हला that is proportional to that is deflection the deflection of theta. Okay, I proportional to theta বা k is constant reduction factor. तो जेते करंट रा वैल्यू बोलले कोन हबो थीटा रा वैल्यू थीटा इज इक्वल टू थीटा माने होची डिफ्लेक्शन. मन रखो थीटा इज द डिफ्लेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन 4 टा कोन शो कला इक्वेशन 4 shows current is directly proportional to deflection. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास पढिबा वर्किंग. नेक्स्ट क्लास पढिबा कहार वर्किंग मूविंग कॉइल galvanometer वर्किंग पढिबा देन मेरिट्स और डिमेरिट्स पढिबा. ओके स्टूडेंट, देन क्वेश्चन कंप्लीट हबो. ओके एक्चुअली आज थ्योरी टा थिला माने क्लास जेतु क्लास टा थ्योरेटिकल थिला बोले मु ब्लैक बोर्ड लिखि दे कि बुझी देली किंतु नेक्स्ट क्लास समझे ठीक से बुझेबी. ओके, तो एठी आज कोन पढा हला आज पढा हला तमर प्रिंसिपल पढा हला देन कंस्ट्रक्शन और देन थ्योरी पढाई जे कहार मूविंग कॉइल galvanometer. ओके स्टूडेंट्स, ओके जदी ए वीडियो क्लास जदी भल लागुची माने काइंडली लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और पाखर थियो बेल आइकन को दबाई दियो. ओके स्टूडेंट्स, और समस्त जदी वीडियो भल लागुची माने समस्त को शेयर कर दिया और समस्त सब्सक्राइब करो. ओके स्टूडेंट्स, बाय.